नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी कानूनी उलझन को सुलझाने वाले हैं। अक्सर हम पर्यावरण बचाने और प्रदूषण रोकने की बातें सुनते हैं, राइट? लेकिन जब बात इन कानूनों को असल में अदालत में लागू करने की आती है तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। आज का यह विश्लेषण इसी बात पर है कि कैसे एक छोटी सी कागजी कानूनी प्रक्रिया किसी बड़े मामले को पूरी तरह से पलट सकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल उठता है। मान लीजिए कहीं जल प्रदूषण हो रहा है, तो क्या कोई भी व्यक्ति अचानक से उठकर सीधे अदालत में आपराधिक मामला दर्ज करा सकता है? क्या अदालतें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना तुरंत एक्शन ले सकती हैं? आमतौर पर लोग यही मान लेते हैं कि भाई प्रदूषण हो रहा है, शिकायत करो और अदालत डंडा चला देगी। लेकिन क्या असलियत में ऐसा होता है? आइए इस धारणा को कानूनी कसौटी पर परखते हैं। तो ये पूरी बहस आखिर शुरू कहाँ से हुई? चलिए उस अहम मामले पर नजर डालते हैं जिसने इस सवाल को खड़ा किया। हम बात कर रहे हैं प्रमोद जैन बनाम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य मामले की। ये सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट में हुई थी और वहां पीठासीन न्यायाधीश थे जस्टिस फरजंद अली। किसी भी कानून को सही से समझने के लिए उस केस का बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होता है, तभी तो पूरी पिक्चर क्लियर होती है। हुआ कुछ यूं कि शुरुआत में एक निचली अदालत यानी एक मैजिस्ट्रेट ने जल अधिनियम के तहत एक मामले का संज्ञान ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इस फैसले को एक रिवीजन कोर्ट में चुनौती दी गई। रिवीजन कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट के उस आदेश को देखा और कहा, रुको जरा। उन्होंने उस आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया और मामले को वापस मैजिस्ट्रेट के पास भेज दिया। और बस निचली अदालत और रिवीजन कोर्ट के बीच की यही खींचतान इस पूरी कानूनी बहस की जड़ बन गई। अब इस मामले की गहराई में जाने से पहले एक भारी भरकम कानूनी शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ये शब्द है लोकस स्टैंडी, यानी सुनवाई का अधिकार। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि क्या किसी व्यक्ति के पास अदालत का दरवाजा खटखटाने या कानूनी कार्यवाही शुरू करने का कानूनी हक है भी या नहीं। हाईकोर्ट का सबसे पहला फोकस इसी बात पर था कि भाई जिसने ये शिकायत दर्ज की है, क्या उसे ऐसा करने का अधिकार कानूनन मिला भी है? और यही एंट्री होती है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 49 की। देखिए, ये कोई मामूली सुझाव नहीं है, बल्कि एक बेहद सख्त और अनिवार्य नियम है। ये धारा साफ साफ कहती है कि कोई भी अदालत इस कानून के तहत किसी अपराध का संज्ञान तब तक ले ही नहीं सकती जब तक कि शिकायत से जुड़ी कुछ खास और सख्त शर्तें पूरी ना हो। मतलब साफ है, बिना सही प्रक्रिया के अदालत के हाथ पूरी तरह से बंधे हुए हैं। तो फिर सही तरीका है क्या? कानून की नज़र में एक वैध शिकायत केवल तभी मानी जाएगी जब वो या तो खुद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दायर की हो, या उनके किसी अधिकृत अधिकारी ने, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने बोर्ड को पूरे 60 दिन पहले नोटिस दिया हो। इसके अलावा कुछ भी हुआ, जैसे कि बिना वैध अधिकार पत्र के शिकायत कर दी या 60 दिन का नोटिस नहीं दिया, तो वो शिकायत सीधे सीधे अवैध मानी जाएगी। ये तुलना दिखाती है कि कानूनी प्रक्रिया कितनी ब्लैक एंड व्हाइट होती है। और यहीं इस विशिष्ट मामले में सबसे बड़ी गड़बड़ हुई। जब सबूतों को पहली नज़र में देखा गया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। सारा मामला एक कागज़ पर आकर अटक गया। इस केस में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जारी कोई वैध अधिकार पत्र या ऑथराइजेशन लेटर था ही नहीं। जरा सोचिए, सिर्फ एक सही कागज़ ना होने की वजह से पूरी की पूरी आपराधिक अभियोजन प्रक्रिया वहीं की वहीं रुक गई। इस भारी कमी को देखते हुए अदालत की टिप्पणी सुनना बहुत दिलचस्प है। जस्टिस फरजंद अली ने बिल्कुल दो टूक शब्दों में कहा, यह कहने की जरूरत नहीं है कि शिकायतकर्ता के पक्ष में वैध अधिकार पत्र के अभाव में आपराधिक अदालत अपराध का संज्ञान लेने में असमर्थ होती है। मतलब जज साहब ने एकदम साफ कर दिया कि चाहे मामला कुछ भी हो, अगर आपके पास सही अथॉरिटी नहीं है तो क्रिमिनल कोर्ट भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। नियम आखिर नियम होते हैं। तो इसका नतीजा क्या निकला? बहुत ही सीधा सा, बिना किसी मान्य अधिकार पत्र के धारा 409 का डंडा चलता है और एक सख्त कानूनी रोक लागू हो जाती है। इसका मतलब है कि वो शिकायत अदालत में सुनवाई के लायक ही नहीं बची। प्रक्रियात्मक कानून यहाँ एक मजबूत दीवार की तरह काम करता है, जो साफ कर देता है कि आरोप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हों, अगर सही चैनल से नहीं आए हैं तो अदालत उन्हें एंटरटेन बिल्कुल नहीं करेगी। खैर, इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए हाई कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट को एक तरह से स्टेप बाय स्टेप होमवर्क दे दिया। 3 साफ निर्देश दिए गए।
पहला, कोई भी कदम उठाने से पहले ये चेक करो कि शिकायतकर्ता का लोकस स्टैंडी है या नहीं। दूसरा, ये कंफर्म करो कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रॉपर अधिकार पत्र मिला है या नहीं। और तीसरा, आगे बढ़ने से पहले इस बात पर एक लिखित और स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करो, मतलब आगे से कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हमें सबसे बड़ी बात क्या समझ आती है? यही कि पर्यावरण कानून में सिर्फ इरादे अच्छे होने से काम नहीं चलता, प्रक्रिया पूरी करना एकदम जरूरी है। जल अधिनियम के तहत नियम बेहद सख्त हैं। अगर कोई भी बोर्ड को बाईपास करने की कोशिश करेगा तो अदालत के हाथ कानूनन बंधे रहेंगे। न्याय पाने के लिए न्याय के बनाए रास्तों पर चलना ही पड़ता है। इसी के साथ हमारा आज का ये कानूनी विश्लेषण पूरा होता है। लॉ शील्ड एडवोकेट्स के साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों को आसानी से समझने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें। जाते जाते एक सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्या इस तरह की सख्त कानूनी प्रक्रियाएं असल में न्याय की रक्षा करती हैं या फिर पर्यावरण बचाने की कोशिशों में सिर्फ अड़ंगा डालती हैं? सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। Look at the thick white foam and debris choking this water source. Prosecuting the entities responsible for this damage requires specific statutory authorization in addition to the physical evidence of the crime. Welcome back to Law Shield Advocates. Today, we are examining a rigid procedural gate. Can a criminal court take cognizance of a water pollution offense without the explicit formal permission of the State Pollution Control Board? The definitive answer comes from a recent ruling in the matter of Pramod Jain versus the regional officer, Rajasthan State Pollution Control Board, and another. Sitting at the Rajasthan High Court, Justice Farjand Ali evaluated a case where this exact procedural requirement was bypassed. In criminal law, taking cognizance means a judge formally acknowledges an offense and initiates judicial proceedings. The High Court ruled that under the Water Act, courts are legally barred from taking that step without valid, documented authorization from the board. Under the Water Act, the court's power to hear the case is strictly contingent on whether the complainant has the legal standing to bring it. To see how this plays out, we look at the origin of the Pramod Jain litigation. A private complainant filed a criminal case invoking the Water Act of 1974. The critical error occurred immediately. The presiding magistrate took cognizance of the alleged offense, but skipped a vital step, verifying if the complainant actually held the legal authority to file the case in the first place. This chart tracks the resulting appellate fallout. The aggrieved party challenged the magistrate's order, elevating the document up to the revision court. Recognizing the procedural defect, the revision court quashed the initial cognizance order and remanded the matter back down to the magistrate. Unwilling to accept the remand, the complainant filed a petition straight to the High Court, challenging the revision court's decision. This placed a very narrow question before Justice Farjand Ali. Was the magistrate's initial failure to verify the complainant's legal standing a fatal flaw? The court's analysis shows how a single procedural oversight at the lowest level triggers the collapse of the entire litigation timeline. The ruling hinges entirely on Section 49 of the Water Prevention and Control of Pollution Act. This section operates as a mandatory statutory gatekeeper. As we see in the statutory text, the law explicitly strips the judiciary of its power to hear a case. The phrasing, "no court shall take cognizance," creates an absolute restriction unless specific criteria are met. Clause A dictates the primary pathway. The State Pollution Control Board, or an officer explicitly authorized by them, holds the exclusive right to file complaints. Clause B provides the only alternative. Any private person can file a citizen suit, provided they have delivered a formal 60-day advance notice of their intent to the board. The Act also establishes a strict jurisdictional floor. No judicial officer lower than a metropolitan magistrate or a judicial magistrate first class is legally permitted to conduct a trial for these offenses. These pathways are mutually exclusive and absolute. There is no residual power for a judge to bypass them in the interest of justice. Section 49 does not merely pause a trial,
It removes the court's legal jurisdiction entirely until the board's criteria are visibly satisfied on the record. Moving from statutory theory to courtroom practice, how does a judge actually verify that Section 49 is satisfied before allowing a trial to proceed? This checklist outlines two strictly enforced avenues for establishing locus standi. A valid complaint requires one of these documents. First, an official authorization letter, an adhikar patra from the Pollution Control Board. Alternatively, evidentiary proof that a 60-day notice was legally served to the board. When the High Court reviewed the Pramod Jain record, they found a complete absence of any official authorization letter issued to the private complainant. Justice Farjand Ali noted that prima facie, meaning on its very face, the complaint lacked the required evidentiary proof. Documentary proof of authorization is a jurisdictional prerequisite. Without it, the court lacks the legal capacity to hear the complaint. Justice Farjand Ali affirmed the revision court's decision, confirming that without a valid authorization letter, the criminal court is wholly incapacitated. He disposed of the petition, ordering the lower magistrate to reevaluate their own initial cognizance order in light of this statutory incapacitation. The ruling lays down a universal instruction for the lower judiciary. Magistrates must conduct a preliminary inquiry into the complainant's legal eligibility before proceeding with the merits of any environmental case. To prevent future procedural collapses, magistrates are now required to record a specific written finding regarding the complainant's authority to file the suit. The immediate legal consequence of failing this verification is severe. The statutory bar of Section 49 is triggered. Once the bar applies, the complaint is rendered legally unmaintainable. It is void from the exact moment it is filed. Bypassing locus standi verification leads to the immediate dismissal of the legal proceeding. For advocates and compliance officers navigating the Water Act, the lesson from the Rajasthan High Court is absolute. The urgency of stopping environmental pollution routinely collides with the cold, rigid reality of procedural compliance. Under the law, good intentions and clear evidence of pollution can never substitute for explicit statutory authorization. Here at Law Shield Advocates, we break down these rulings because rigorous legal analysis protects your practice from fatal procedural errors. Subscribe to the channel and follow us on our platforms for more professional breakdowns of complex legal precedent. In the realm of environmental prosecution, mastering procedure is the only guarantee of achieving justice.